Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I am Raza Ali Mugheri, lecturer physics at Cadet College, Panwakil. Welcome you all again in our online video classes. We are discussing chapter number 7, named as a circular motion and gravitation. The topic that we will discuss today are: number first is law of universal gravitation. Number second is mass of Earth. First, we will discuss what is law of universal gravitation. Before going to discuss what is law of universal gravitation, first we will discuss what is gravitation. A gravitation is a simply force of attraction between the bodies in this universe. इस पूरी कायनात के अंदर किसी भी जिस्मों के अंदर जो कशिश वाली फोर्स होगी, उस कशिश वाली फोर्स को हम नाम देंगे ग्रेविटेशन. तो मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टर्म्स ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी. इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं वो आगे चल के हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं. लेकिन ग्रेविटेशन आप क्लियर समझ लें कि ग्रेविटेशन अट्रैक्शन जिस्मों के दरमियान, वो बॉडीज चाहे यूनिवर्स के अंदर हो चाहे अर्थ के अंदर हो. नाउ द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय अ फेमस साइंटिस्ट नेम्ड एज अ सर आइजैक न्यूटन in 1686. According to this law, in this universe, all the bodies attract each other with a force which is directly proportional to the masses of bodies and inversely proportional to square of distance between them. सर आइजैक न्यूटन के मुताबिक इस पूरी कायनात के अंदर जितनी भी बॉडीज़ हैं वो हमेशा एक दूसरे को कशिश करती रहती हैं, एक कुव्वत के साथ, एक फोर्स के साथ. वो फोर्स डायरेक्ट वाबस्ता रखता है उन बॉडीज के मासेस के साथ और इनवर्स ताल्लुक रखता है उनके दरमियान जो मुफासला है या उनके दरमियान जो डिस्टेंस है. सिंपल स्टेटमेंट को अगर समझा जाए तो इस पूरी कायनात के अंदर हमेशा एक बॉडी दूसरी बॉडी या दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं एक फोर्स के साथ. अभी वो फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी अगर बॉडीज के अंदर मासेस ज़्यादा होंगी. अगर बॉडीज के अंदर मासेस कम है तो वो फोर्स भी कम होगी. उसके अलावा सेकंड कि उन बॉडीज के दरमियान जो फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी अगर उनके दरमियान मुफासला कम है. अगर मुफासला ज़्यादा है तो उनके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी. अब इसको समझने के लिए वी आर कंसीडरिंग अ सिंपल स्टेटमेंट कि वी हैव अ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस m1 and m2. The body is simply named as a body A and body B. According to law of universal gravitation, what happen? The body will attract each other with a force. कि हम सपोजिशन के ऊपर दो बॉडीज ले रहे हैं. एक बॉडी जिसका नाम है A, उसके अंदर मास m1 है. दूसरा बॉडी हमारे पास है B जिसके अंदर मास m2 है. न्यूटन्स के लॉ के मुताबिक ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी एक फोर्स के साथ, जिस फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं F में. वो फोर्स ताल्लुक रखेगा एक तो इन बॉडीज के मासेस के साथ, दूसरा उसका ताल्लुक है उनके दरमियान ये जो मुफासला है जिसको हम नाम देते हैं R, रेडियस. ठीक है बेटा. तो ये रेडियस आपके दोनों बॉडीज के सेंटर से लेकर उसके दरमियान तक जो मुफासला होता है उसको मेजर करते हैं. तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक जो हमने स्टेटमेंट डिस्कस किया था उसको मैथमेटिकली लिख रहे हैं. उसके अंदर F is directly proportional to m1 and m2. The product of force or the magnitude of force is directly proportional to the masses of body जिसको m1 and m2 लिख रहे हैं. Secondly, that force is inversely proportional to square of distance between them. Secondly, F inverse R square. Now on these both equations 1 and 2, we will get a mathematical formula that is F is directly proportional to m1 m2 upon R square. Now in physics, whenever there is a proportionality sign, we always replace it with two things. First is equal and second is any constant. तो यहाँ इस इक्वेशन में उस प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को रिमूव करने के लिए हमने एक इक्वल लिया. दूसरा हम ले रहे हैं
जी, और जी क्या है यहाँ, वेयर कैपिटल जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जहाँ हमारे पास ये जो कैपिटल जी है, इस कैपिटल जी का नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन मस्ट राइज इन योर माइंड कि अगर बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं इस लॉ के मुताबिक, वो बॉडीज चाहे अर्थ के अंदर हो या यूनिवर्स के अंदर हो, व्हाई वी नॉट फील दैट अट्रैक्शन, कि हम उन अट्रैक्शन को या उन बॉडीज के दरमियान जो खिंचाव का फोर्स आ रहा है उसको हम फील क्यों नहीं करते? इसके लिए रीजन ये है कि हमारे पास, अगर हम जमीन के अंदर हैं तो दो तरह की फोर्स आ जाती हैं। एक फोर्स आती है ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी वाली फोर्स को क्लियर कर लें कि द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी, कि यहाँ हमारे पास एक जिस्म क्लियर हो गया, दैट इज अर्थ, कि जमीन जब भी किसी चीज को अपनी तरफ खींचे तो उसके जमीन वाली खिंचाव को, जमीन की कशिश को हम नाम देते हैं ग्रेविटी। और जो भी चीज ग्रेविटी के तरफ आएगी वो किसी तेजी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ आती है, जिस एक्सेलरेशन को हम नाम देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। लेकिन अगर ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन के अंदर वी डू नॉट नो कि व्हाट द बॉडीज आर, कि वो बॉडीज हैं कौन सी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम क्या डिस्कस करेंगे, हम उनके दरमियान होने वाली अट्रैक्शन की बात करते हैं, कि वो जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो उस अट्रैक्शन के दरमियान जो फोर्स है उस फोर्स के मुतालिक डिस्कस करते हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ दैट जी which is known as a gravitational constant was determined by a scientist named as a Kevin Davish by using Kevin Davish balance। उसने इस g के वैल्यू को कैलकुलेट किया था। कैलकुलेट करने के बाद दैट g was 6.67 into 10 is power minus 11 and its unit is न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का वैल्यू आ गया। तो एज यू सी दिस वैल्यू इज -11 टाइम स्मॉलर, कि ये -11 टाइम कम वैल्यू है, छोटा वैल्यू है। तो इस छोटे वैल्यू होने की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स आती है बॉडीज के दरमियान, वो इतना कम होता है कि हम उसको फील नहीं कर सकते, हम उनको महसूस नहीं करते। अगर महसूस नहीं करते कि रीजन इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल एंड इट्स -11 टाइम्स स्मॉलर। अगर इसकी कंपैरिजन हम जी के साथ करें तो ग्रेविटी की तरफ जो भी चीजें नीचे की तरफ जाती हैं आसानी देख सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि उन चीजों की मोशन को हम इजीली जज कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द कैपिटल जी। नाउ you must clear yourself कि what is difference between small g and capital G. The first one is small g is represent, or small g is called acceleration due to gravity, while the capital G is called as a gravitational constant. Now, the value of small g is 9.8 meter per second square. It represents the acceleration, while the value of capital G is 6.67 into 10 is power minus 11. The value of small g is only exist when there is a force of gravity, when there is attraction of earth, while the capital G will presence everywhere. The small g values may be vary whenever we are moving away from the earth. Let's suppose we are moving towards in a space, there is a no attraction of a gravity, therefore at that place the small g will be zero, while the capital G's value will remain same at everywhere whenever wherever you so want to travel. Okay, that are main difference between small g and a capital G. After that, we have a mass of Earth. The mass term we have already discussed in our previous video lectures, but here I am repeating it again. कि mass is simply defined as it's a quantity of matter present in a body. कि किसी भी जिस्म के अंदर मादे की जो मिकदार मौजूद हो, उस मिकदार को हम नाम देते हैं मास। Now, mass of Earth. If we will back few years ago, it was quite difficult to measure a mass of a single elephant then. But we are talking about the mass of Earth. This was only possible, measurable when we come to know about the law which is named as the law of universal gravitation. First of all, the question may rise in your minds, is it possible that we can measure that whole mass of Earth? Because nowadays
We can easily measure the mass of an elephant by using a digital calculators. With the help of that, we can easily measure it. But how we can put the whole mass on that calculator to measure it? No need for all. We can easily measure the mass of Earth by using a very famous law, which is called as a law of universal gravitation. कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के तहत उसकी मदद से हम मास ऑफ अर्थ को मालूम कर सकते हैं। मास ऑफ अर्थ तो ठीक, इसके अलावा हमने मास ऑफ सन तक मेजर कर लिया है। नाउ द थिंग इज हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल आवर माइंड इज, if you ask from yourself, your mind does not reply, and even though he does not accept the thing that we are talking so far, very easily to understand it, कि whenever we start our journey, whenever we start the traveling from earth's surface to space, कि जैसे ही हमने अर्थ की सतह, जमीन की सतह से लेकर खिला के अंदर जाना शुरू किया, तो what we come to know, we know the distance, we know the distance from the surface of earth to the point where the earth ends, जिसको हम स्पेस कहते हैं। जैसे हमने स्पेस तक जाने का मुफासला तय कर लिया, उस मुफासले को हमने कैलकुलेट कर लिया, तो कैलकुलेट करने के बाद it become very easy to calculate the mass of earth. Now we are coming back how we can calculate that. Now to calculate the mass of earth, first of all we are considering a small body having the mass m, which is lie on the surface of earth. We are supposing two things. Number first is me. Here the m is written as a capital so that we can easily understand why we are using it. Me will stand for mass of earth and re will stand for the radius of earth. As you see a diagram, this whole circular path, we just consider it that this whole circular path is our earth, and on its surface means the point where the earth is ending, or where the attraction of gravity is just opposed to ending, from where the space may start, वहां पे हमने एक छोटा सा बॉडी लिया है, जिस बॉडी का जो मास ले रहे हैं हम एम ले रहे हैं। दिस विल बी कॉल्ड द सेंटर ऑफ दिस होल अर्थ। इस सेंटर से लेकर उस बॉडी तक जो मुफासला है, उस मुफासले को हम नाम देंगे रेडियस, जिसको हम लिखेंगे आर ई, मीन्स के रेडियस ऑफ अर्थ। नाउ एम ई represent the whole mass of this circular path, which is called as a earth. Now what we are doing, we are simply first the force with which the earth attracts the body will be called as a weight. लेकिन उससे पहले हमने जो फार्मूला डिस्कस किया था यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अभी एम वन को हम रिप्लेस कर रहे हैं एम के साथ, एम टू को हम रिप्लेस करेंगे एम ई के साथ, और आर को रिप्लेस करेंगे आर ई के साथ। तब हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, F is equal to G M M E upon R E square. Let me clear the things. Where F is a force, capital G is gravitational constant, M is the mass of body which was placed on the surface of Earth, M E is the mass of Earth, and R E is the radius of Earth. As you know, whenever a body is placed within the gravity of Earth, or within the limitations where the gravity can act on that body, then there a force will appear. That force will be simply called as a weight of body. Therefore the F is replaced by W, and W is always equal to mg. Now in place of F we are direct putting here mg is equal to G M me over re square. Now simply the m, mass of body, which was already known, we are cancel out these two things. Let me extend one step so that you may understand clearly. Okay, here we are getting the small g, which is equal to capital G, then small m and me upon re स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमारे पास जो m मल्टीप्लीकेशन के अंदर था
तो यहाँ वो m किस चीज़ के अंदर आ जाएगी, डिवीजन में आ जाएगी। तो यहाँ से m m में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और इसको हम कैंसिल आउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ जो बॉडी होगा उसका मास हमें पहले से मालूम होगा। नाउ बाय BCM, capital G M E is equal to small g R E square. We want to find the mass of Earth, therefore ME is equal to small g RE square upon capital G. Now this is a formula which we will use to calculate the mass of Earth, or which we will use to find the mass of Earth. Now in the formula we have three things: small g, capital G, and radius of Earth. These values are known. The value of small g is 9.8 meter per second square, and the value of capital G is 6.67 into 10 s power minus 11. After that, we have a value of radius of Earth, and this value of radius of Earth was calculated whenever we start the journey from, or whenever we traveling from Earth's surface to the space, and that whole distance is 6.38 into 10 s power 8 into 10 power 6, sorry, 6.38 into 10 s power 6 meter. This is a distance, or which is simply called as the radius of Earth. Now putting all these values in equation of mass of Earth, m is equal to g me upon r e square, we will simply get the mass of Earth, that is me is equal to 6 into 10 s power 24 kg. And this is all for today's lecture. Hope you people have understand. If you want to ask any question, you may ask in a comment section. Thank you.